आपको जॉब कैसे मिली, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, थोड़ा असाइनमेंट के बारे में बताएं। आपका जो इंटर्नशिप लगा अमेजोन में, उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चंस टैकल हुए, पीएचडी करने का मेन मोटिव क्या था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट नितिश। आज हम फिर आ गए अपने ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट को लेके। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के हमारे होस्ट हैं गौरव। ही इज़ करेंटली वर्किंग एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर और साइड बाय साइड पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं, लास्ट ईयर इनका। तो इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि मोस्टली मास्टर्स क्यों करनी चाहिए, देन इन्होंने पीएचडी कर ली, पीएचडी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं। So, hi Gaurav, please introduce yourself. Hi Nitish, thank you for inviting me, and I'm really glad to be here. I hope I can help a lot of people through this channel. About me, I'm a security engineer at college, and I am also a PhD student at National Forensic Science University. And I like watching anime, and I like exploring new food cuisines. And I really love talking about security, forensics, and essentially anything computer science. So, you know, if someone is interested and if someone wants to talk to me, I'll be really excited about talking about be it forensics or security or anything. And it's not just limited to just digital forensics or cybersecurity. If you want to talk to me about, let's say, physical security or maybe toxicology or whatever you're interested in, I am interested in all those specific on all those subjects as well. I'll be happy to learn from you in those areas. Once again, thank you for inviting me, Nitish. शुक्रिया शुक्रिया। सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में। तो जब मैं थर्ड ग्रेड में था ना, तो मैं चाहता था कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूं। एंड उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि साइंटिस्ट क्या होता है एंड वो क्या करते हैं। मुझे लगता था कि वो तो जस्ट केमिकल से कुछ खेलते हैं एंड केमिकल से कुछ बनाते हैं एंड वो साइंटिस्ट होता है। मतलब उसके आसपास की जो दुनिया होती है, उसके आसपास जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है, मुझे उसका इतना ज्यादा आइडिया था नहीं। एंड एज ईयर्स वेंट बाय, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट हुआ, बिकॉज मेरे पास घर में मेरी फैमिली के पास कंप्यूटर सिस्टम था। एंड आई वाज लकी इनफ दैट आई हैड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मेरे पास पेंटियम 3 कंप्यूटर था विद 512 मेगाबाइट्स ऑफ रैम, and I used to play games on it, and sometimes I used to annoy my sister by deleting her code. And but it was interesting to be able to experiment on computers. It increased the level of interest. It made me feel कि okay कि मैं इसको सिर्फ यूज कर रहा हूँ, भी मे बी इससे और कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रोइंग अप मैं कुछ कभी मूवीज देखता था, तो उसमें कुछ मतलब हॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखाते थे कि वो कंप्यूटर से कहते थे कि दे दैट आई हैक दिस, आई हैक दैट, या फिर कोई बैंक को हैक कर दिया, फिर कोई वेबसाइट को कर दिया, और कोई उसमें से हीरो को दिखाते थे कि दे हैक समथिंग टू ओपन द डोर्स और वट एवर। तो दैट दैट समथिंग आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग। दैट एंड डिटेक्टिव मूवीज, लाइक जैसे बैटमैन के कोई मूवीज रहते थे, तो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगते थे। तो दैट आई थिंक डेवलप्ड माई इंटरेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स or those specific subjects. And as I started going into college, I learned that these things are real. It's not just completely fiction. But it took some time for me to get there. But overall, I think my research interest or my interest around security was developed because I had access to it from a very early age, and because I think I was influenced a lot by the movies that I watched, and I guess maybe the specific interests that I developed along the way. यही रहता है मोस्टली कि लोग स्टार्टिंग में कंप्यूटर से खेलने लगते हैं, देन उन पे इंटरेस्ट बनने लगता है उस फील्ड में। सो आपने कॉलेजेस कहाँ से की, अपना कॉलेज लाइक ग्रेजुएशन कहाँ से करी, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े, थोड़ा उसके बारे में बताइए। Okay, so I did BCA, Bachelor's in Computer Applications, from Vivekananda Institute of Professional Studies. It is part of Guru Gobind Singh Indraprasth University. It's in Delhi, Pitampura. It's a nice college. I am glad that I did my BCA from there because I was able to go through a very positive culture about learning and about developing as a person there. So
well, I don't know how things go in other colleges क्योंकि मेरे पास तो एक ही कॉलेज का एक्सपीरियंस है, but I feel my undergrad college has been has played a very vital role in developing me as a person, because sometimes I would not go the extra mile to learn new things. Like computer graphics में I used to find it very difficult क्योंकि जो algorithms हम सीखते थे मुझे वो complex लगते थे. I used to find maths very difficult. I used to find algorithms like Bressenham difficult. But I think the teachers and my friends, they were really motivating कि अगर मैं कहीं पे रुक जाता था फिर अटक जाता था, so they used to the teachers had used to find creative ways to support the whole class and help us in a very in a very positive way by rewarding those students who went the extra mile. So it wasn't like कि उन्होंने कुछ ऐसे कुछ assignment दे दिया and you just solve it and that's it. So we used to get assignments, we used to solve them, but we used to also discuss more innovative methods of, let's say, drawing a line or drawing a circle. So I think that was very interesting. As for subjects, I studied normal computer science subjects, DBMS, operating systems, networking, Linux, some programming like PHP, VB.NET, Java, C, C++, little bit of physics, little bit of mathematics. Um, and those were all very interesting subjects. And उस टाइम मुझे उन सब की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई नहीं. आई यूज्ड टू फील कि why don't we have the latest and the greatest frameworks as our subjects. क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि जो frameworks जो latest आ रहे हैं, be it I don't know React or Angular or something, वही सीखना चाहिए because software तो उसी से बन रहा है. I failed to understand कि जो fundamentals जो हम सीख रहे हैं, maybe in data structures, maybe the core concepts of computer science, उन्हीं को तो यूज करके ये न्यू फ्रेमवर्क्स बने हैं. एंड फ्रेमवर्क्स तो आते जाते रहेंगे बट फंडामेंटल्स तो चेंज नहीं होंगे ना. तो ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूचर में जाके ये एरेज लिस्ट ट्रीज वगैरह वो पूरी तरह से यूज होने बंद हो जाएंगे. तो आई थिंक I should have spent some more time understanding the fundamentals during my undergrad. So, and that would be my suggestion to any student who is listening right now. कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हो आपको फील होता है कि आपके सब्जेक्ट्स थोड़े अप टू द मार्क नहीं है, मे बी वो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है, तो मे बी स्पेंड सम मोर टाइम अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने वो सब्जेक्ट्स क्यों बनाए हैं, या फिर आपका कोर्स जिस वे में डिजाइंड है क्यों डिजाइंड है ऐसा, जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं क्यों है वहाँ पे. इनफैक्ट उनको अपना गूगल पे सर्च करो कि एमआईटी में कैसे पढ़ाया जाता है, स्टैनफोर्ड में, या फिर जो भी आपको यूनिवर्सिटी जो आप एडमायर करते हो, मे बी आईआईटी और ट्रिपल आईटी, वट एवर दैट यूनिवर्सिटी दैट यू एडमायर द मोस्ट, उनसे एक बार कंपेयर करके देखो. चांसेस आर कि वहाँ पे भी फंडामेंटल्स सिमिलर वे में ही और सिमिलर तरीके से ही पढ़ाए जाएंगे. वहाँ पे भी फंडामेंटल सिमिलर टॉपिक्स होंगे जो कि आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो. एंड इफ यू फील कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, देन आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज जिनको आप यूज कर सकते हो. बट चांसेस आर अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है आपके डिग्री में, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड चांस कि आपके पास फंडामेंटल टॉपिक्स होंगे ही होंगे. एंड वो बेस अगर आपका स्ट्रांग बन जाएगा ना, तो फ्यूचर में आप कोई भी फ्रेमवर्क लर्न कर सकते हो, बना सकते हो खुद का फ्रेमवर्क. एंड इन साइबर सिक्योरिटी स्पेशली अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो आप बोथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग या रेड टीमिंग और डिफेंसिव सिक्योरिटी दोनों साइड आपको समझना ज्यादा आसान रहेगा. टू बी एबल टू अंडरस्टैंड अ सिस्टम, टू बी एबल टू build a system from scratch, I think that is a superpower that you can use to learn engineering in general. It's not specific कि cyber security में ही काम आएगा. हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट कंपनी में चले जाओ जैसे गूगल या फॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट या कुछ, एंड वहां पे तो वो लोग अपने खुद के फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज बनाते हैं स्क्रैच से, तो वहां पे तो वो लोग यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का. एंड मेरे एक्सपीरियंस में भी मुझे फील हुआ है कि रिकर्जन डेटा स्ट्रक्चर्स दे आर यूजफुल. एंड that's something we can discuss as we continue this podcast. But to summarize, I think that undergraduate college experience, I think it is very important because it develops the foundation. And while it may sound very cliched, it is true. It is cliched because it is true, and तभी ये सब लोग एडवाइस करते हैं.
तो I guess spend a lot of time revising your fundamentals and you'll be good. अंडरग्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल्स का, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है. सो अंडरग्रेड के बाद आपने लाइक जॉब करी कि मास्टर्स के लिए आपने परस्यू किया? So that's a very interesting story. um, I didn't know कि cyber security में जॉब कैसे मिलता है. I didn't really have much idea about it. So during my undergrad I did this internship and जो मेरे मैनेजर थे वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना साइबर सिक्योरिटी में आगे चल के जॉब करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे. So he suggested that I can do a master's degree from Gujarat Forensic Science University. These days it's called National Forensic Science University. 2021 में उनका उसका नेम चेंज हुआ था. So it was a state government university back then. And मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा थी ना होता है कि मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी ऐसा थी ना होते हैं कोई कोर्स. तो आई डेंट रियली बिलीव हिम. फिर मैंने वो उनका वेबसाइट ओपन करके देखा. इट लुक प्रीटी लेजिट टू मी, बट मैं स्टिल थोड़ा सा सस्पिशियस था कि मतलब कहीं मेरे साथ कुछ स्कैम तो नहीं हो जाएगा. बट मैंने काफी टाइम स्पेंड किया उसकी वेबसाइट पे, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, उनसे बात करी. तो मतलब वो सब लेजिट लग रहा था. एंड आई वाज ग्लैड कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उनका भी मुझे कांटेक्ट मिल रहा था वहाँ पे उस टाइम पे. तो मैंने उन प्रोफेसर्स को भी कॉल करके पूछा. तो आई over a span of I guess a few weeks, maybe 2-3 weeks, I was able to confirm कि हाँ ऐसा है, ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी. एंड after completing my undergraduate degree, I applied for a course there, and वहाँ पे मैं GFSU गया गुजरात में गांधीनगर में. And they had this entrance exam, and I was able to clear the entrance exam, and I was able to join MSc Digital Forensics सो course आप there. कुछ बताएं लाइक एग्ज़ाम कैसे होता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका? सेपरेट एग्ज़ाम होता है? फिर एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सीटिंग क्या है, लाइक कितने अलग ब्रांचेज हैं, और भी कोई वैसा स्ट्रक्चर है? लाइक गांधीनगर तो एक पूरा कॉलेज प्रॉपर है, लाइक उसमें लैब्स हैं, और भी जगह जो इनकी ब्रांचेज हैं वहाँ पे भी हेल्पफुल अगर कोई कोर्स वहाँ ज्वाइन करे तो. लाइक एग्ज़ाम मेनली क्या, एग्ज़ाम कैसा है, एग्ज़ाम पैटर्न्स कैसे हैं? ओके, सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ इसका, बिकॉज मुझे हर कोर्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल तो नहीं पता. तो दे हैव दिस एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड NFAT, नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट. व्हेन आई जॉइंड इट वाज अ डिफरेंट एग्जाम. इट यूज्ड टू बी इट वाज कॉल्ड समथिंग एल्स. बट अब इन्होंने पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम काफी ज्यादा यूनिफाई कर दिया है. तो इफ यू लुक फॉर NFAT एंड सब्जेक्ट्स को सर्च करो तो आपको NFAT का सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम मिल जाएगा. And you'll find a course related to almost everything there, from management to engineering to law to uh, uh, hospital management. There are a lot of courses there. And NFSU is well, it is a proper premier university. You could call it. Uh, I guess it consider it, you could count it as tier one, because so in the constitution it is institute of national importance. So just like IITs and IIMs are deemed institute of national importance, NFSU has the same level of recognition in the constitution. And वो उसके बारे में आप पूरा रीड कर सकते हो, मतलब NFSU के बारे में वेबसाइट पे होगा. As for different locations, as जहाँ तक मुझे आता है, there is one in Delhi, there is of course obviously in Gandhinagar, um, there is one in Tripura, there is one in Goa, एक शायद कर्नाटका में भी कहीं पे. I don't remember the location exactly, but you'll be able to find out. And as per my experience, it is better that you go to the Gandhinagar campus because that's the headquarters. So it is most developed. It's the oldest campus. Other campuses are still developing. So it's just easier to get access to the latest equipments in the Gandhinagar campus. But other campus probably have similar level of access to all the best technologies or tools and everything. But I've not been there, so I'm not sure what's the current situation. It's better that you speak to the university, and they will be able to guide you better. ओके. सो आपने गेट का एग्जाम दे के लाइक आईआईटी एनआईटीज में क्यों नहीं ट्राई किया? आप स्पेसिफिक टू दिस कॉलेज आप क्यों रहे? क्या एडवांटेज है इस कॉलेज के और दूसरे कॉलेजेस से? I don't really know कि BCA के बाद मैं गेट दे भी सकता था नहीं.
And I still feel that it's not that eligibility to go for GATE only comes if you have done either BTech or if you have completed MCA or MSc or something. So I probably would have done the same. Or probably would have gone through the same process of like going through GATE to go for IIT or something. बट मैं एक स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन करना चाहता था. एंड उस टाइम पे मुझे यही रूट समझ में आ रहा था. देयर सम स्टेट यूनिवर्सिटी and they have this MSc Digital Forensics and Information Security course, and I found that very interesting that a specialized course like this exists in India. There were some more universities, like I think maybe two other universities that I found जहाँ पे similar courses थे, but um, I think they were either too expensive or there was some other reason that I couldn't apply there. I don't exactly remember their names. Um, it's just that GFSU felt a little bit more accessible, and it was more about. I think it was very coincidental that I was able to find that specific university, and also मेरे manager का भी थोड़ा endorsement था, तो I think I was just a bit biased towards it, but luckily it all worked well for me. It all ओके. worked out. सो इस कॉलेज के बारे में बताइए, लाइक इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, लाइक क्या पढ़ाया जाता है, लैब कैसी हैं, कितना रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलता है चीज़ों का, टीचर्स के कैसे हेल्पफुल हैं. So I can tell about my course in detail. As for other courses, like there are lots of courses. I I won't be able to count them all. So so there are undergraduate courses, graduate courses. There's PhD, there's DSc, and I think there is an IPS officer who has recently completed DSc in forensics. I think he's the first person in at least in India who has completed this DSc in forensics. So that was really interesting and surprising for me to see that this university is living up to the name. That it's not just premier in name; they're also living up to it with by uh, giving the premier education and leading the front in forensics. So almost all the courses are related to forensics in one way or another, because as the name suggests, it is a forensics university. You'll find courses like, let's say, there's forensic accounting. So they specialize in finding out financial frauds and catching financial frauds. But talking about my specific course, digital forensics and information security, and related courses like MSc cybersecurity, MTech cybersecurity and all. So हमारा class ही lab था. So almost every class had some kind of practical aspect to it. So it wasn't like that ki there will be some theory subjects, there will be some practical subjects. Every subject was a practical subject, and there was practical aspect to every subject. So it wasn't like ki you'll get some as lab assigned for some time and you'll go there. Your class is your lab, and you have access to the computers, so you can just so you can practically implement the things that you're studying. And as for professors, I think at least I found them very helpful, and they are very open for discussion. And the way they teach, they make it a discussion and not a lecture. Essentially, you can have a proper discussion with open discussion with teachers, and it's not just someone lecturing you about something. Okay, these are XYZ things, learn them, read them about it, and then we'll have some exam. It's not like that. You can discuss things with them. Let's say you want to understand packet size क्यों matter करता है, or if you want to understand कि TCP कैसे implemented है, HTTPS क्यों implemented है. So depending on the specifics, maybe if you're studying networking during that time, so you will probably get some assignment that okay, you know what, perform a specific attack using Nmap or something, and वो Wireshark में तुम उसको पूरा उसका analysis करो, and then you can discuss the same with your professor. And if you and your professor, if you both like the results, then you can extend it to a project, and later that project can grow into something bigger. Maybe you can convert it into a product in future. The university has a student innovation program. They have some funds for that, so you can apply for startup funds. I think they call it SSIP. So
you can apply for funds there, and depending upon the POC and the novelty of your product, you'll be assigned the funds that you request for, and through that you can build a startup out of the university. So I think there's a very healthy culture of overall learning about forensics, and it's not completely theoretical. So that's one of the USPs that I really like about it. Whatever you see theoretically, you'll be able to apply. And it's not just limited to just computer science or cybersecurity. Some of my friends in food technology, they go for audits to other companies. They as interns, they learn how to audit food samples, like whether they are adulterated or not, and they also learn the same how to do it in house, because we have labs for all those things. We have proper equipment for psychology students as well, and sometimes I used to go there as a subject, and we have proper machines for them that they can do ECG and all, apply the proper gel and everything, and then understand my brain activity. And you can also collaborate, like maybe you want to build some kind of forensic psychology software or something, so you can collaborate with neuropsychology or forensic psychology students, and they will be able to help you understand how their tool works, what kind of data they get, and maybe with that, maybe while collaborating with them, you can come up with something new. So I think there are these are the few things that they are doing right, and I think if you are really into forensics, then it is a great university to go to. सो इसके बाद लाइक प्लेसमेंट का कितना हेल्पफुल रहता है, कैसी प्लेसमेंट रहती है यहाँ पे, लाइक आपको कहाँ पे प्लेसमेंट मिली, इन कॉलेज मिली, लाइक कि आउट ऑफ द कॉलेज, लाइक आपने बाहर से सर्च किया हो, लाइक आपकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में बताइए कुछ. So the university has this 100% placement assistance. They don't call it guarantee because it's really hard to guarantee placement or jobs. And this dynamic nature of market, आपने भी कई बार देखो कि a lot of times students, freshers who are given joining letter, sometimes their joining letter gets cancelled or rescinded even by, कैंसिल कर देती हैं, तो लाइक रिसेशन भी चल ही रहा है, काफ़ी कम जॉब्स हैं, तो वो हो जाता है. तो लाइक असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में, लाइक क्या है ये, कैसे असिस्टेंट प्रोवाइड कराती हैं ये वाली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को. Yeah, so it works just like a normal placement cell. It's just that they call the word they use it is 100% assistance, because they try to bring in as many companies as possible, and then it's up to the student to clear the interview and then join. But in my experience, most of the students, they do get the job, because I think if they've studied well, they understand their subjects, then they will be able to clear the interviews. A lot of students in my batch, they went to Amazon, Salesforce, and a lot of my seniors, they went to Qualcomm. I think some of my batchmates, they also went to Qualcomm. Some of my juniors, they went to Microsoft, and some of my batchmates, they started their own business. There's this startup called Arishti Info Labs. It's an operational technology security startup. And there's another startup called Forensic Cyber Tech by my seniors, and it's a forensics product startup. They do multiple things. Forensics. They're building great products. They are delivering great services. So I think placement is done really well. As for me specifically, I joined Amazon as an intern during through college placement, and I worked there for 6 months. Later, I joined a cloud security startup when I left Amazon. सो लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती हैं, लाइक जो सिक्योरिटी में, उसमें भी हेल्प करता है, लाइक नॉट ए प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है कॉलेज के थ्रू, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाएं. So I think there are 3 ways you can do internship when you're in NFSU, or rather 3 ways that you can spend your final semester in NFSU. First option is you can get an internship in a private company, some security company like Sophos or Qualcomm or something. Second option is you can join one of the government agencies. It won't be a full-time job. It will probably a contract or something. I don't know the exact specifics,
but you can work with, let's say there's CBI or Anti-Corruption Bureau, and then there's Enforcement Directorate. So NFSU is very closely tied with the law enforcement agencies of India, and reports generated by NFSU are accepted in the court of law. And when I say reports, these are forensic reports. So if there's an actual real crime happening somewhere, NFSU is allowed to, or rather, they have the power to uh, uh, analyze that case and provide their reports to the court of law, so that that specific case can be resolved. And uh, to that end, it provides it helps students by giving them the opportunity to work for certain government agencies, um, through by providing some kind of letter of recommendation or something, and they're accepted by those agencies. I got the chance to work with this Directorate of Forensic Science. This is Forensic Science Laboratory in Gujarat, Gandhinagar. So I interned there for 2 weeks. That was like that. It used to be a mandatory training for us back then. Things might have changed now because I don't know how it is for master students these days. But earlier it used to be a mandatory training for all of us. And there I was able to understand how things are happening in the government machine, and how are they uh, doing real forensic science things, and it was really interesting. As for the third thing that you can do, let's say you don't want to do internship, you don't want to go to some private agency or some government agency, you want to pursue academic research, or or you prefer pure research, then that's also okay. You can explain your intent to your professor, and they will say that's fine, you can continue with your research within the campus, and they will support you depending upon the subject you select. So you can go to the professor with the right kind of expertise and right kind of ideas that match with the kind of research you want to pursue, and you can continue with that kind of project as well. So those are three ways that you can continue with your internship journey. And usually this internship, it happens at the end of the course. It's either final semester or final year. सो आपका जो इंटर्नशिप लगा अमेज़ोन में, उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चंस टैकल हुए, कुछ उसके बारे में बताइए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई? तो इंटरव्यू में तो मोस्टली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे अमेजोन में, एंड मोस्टली फिजिकल सिक्योरिटी के अराउंड क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने उनका सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन टीम ज्वाइन किया था। एंड जो सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन टीम है, उसमें क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई कंप्यूटर या मोबाइल या कोई ऐसा कोई डिवाइस आपने ऑर्डर किया अमेजोन से, तो यू प्रेफर कि वही सेम एग्जैक्ट डिवाइस आए, कुछ मतलब अलग ना आए, कुछ साबुन ना आ जाए, मतलब गलती। तो उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए उनके पास एक सिक्योरिटी टीम है, जिसे वो सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन कहते हैं। एंड वो उनके अमेजोन के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पे काम करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर फर्स्ट माइल टू लास्ट माइल, वो इट कवर्स एवरीथिंग। एंड उसमें उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, बी इट अराउंड फिजिकल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, और मतलब एसेंशियली जो पूरा लॉजिस्टिक्स कवर करे, वेयर हाउस के अंदर, ट्रक्स में, और जो उनके फिर बीच में मिडिल माइल और लास्ट माइल के जो उनके लोकेशंस होते हैं, वहां पे ऑडिटिंग करना। ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर बाय देयर सिक्योरिटी एंड लॉस प्रिवेंशन टीम। मेरा काम वहाँ पे स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑडिटिंग था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था। आई कैनॉट गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल बिकॉज द प्रोजेक्ट वाज रनिंग पैन इंडिया, and I cannot name the specific details, but I got the chance to do a little bit of project management, little bit of penetration testing on mobile applications, web applications, and it was a very interesting experience because it was my first time doing some penetration testing on a real product. So documenting was a big thing, and I cannot stress this enough, but if it is your first job, or if it is your first internship, or even if you're experienced, I think you should be documenting every day. You should be documenting whatever you do every day, even if writing documents is not a part of your primary job. अब जो भी काम कर रहे हो ना रोज, उसको एंड ऑफ द डे भी 5 PM 6 PM या जो भी जैसे आपके वर्क टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंग, जब भी आपका टाइम खत्म हो रहा है,
तो कहीं पे नोट्स में या किसी या फिर जैसे भी आपको किसी ऐप में या फिर नोटबुक या जो भी आपको इजी लगता है, वहाँ पे ब्रीफ में डॉक्यूमेंट कर लो कि आज मैंने क्या काम करा। लाइक कैलेंडर्स, गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर ले आप अपना डेली शेड्यूल। या मतलब जो भी आपको इजी लगे जहाँ हम्म। डॉक्यूमेंट करना, वट एवर ऐप दैट यू प्रेफर, वट एवर मेथड दैट यू प्रेफर, बट कहीं पे हो डॉक्यूमेंटेड। तो दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग अप्रेजल्स अलॉट। इट विल ऑल्सो, अगर आप इंटर्नशिप है आपका, तो वो पीपीओ लेने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि दे विल बी आस्किंग यू कि आपने क्या काम करा हमें बताओ। हम वो पूरा वो so you'll have to create that document as well. At the end of the day, internship, they asked me to document everything that I did in a big document so that they can discuss, and we can talk about moving forward with the company or not, like how do we want to go with this. And so वो तो personal documentation हो गया. Second, sometimes you'll have to document things that you do. So there was this software that we were working on, that we were penetration testing, and I had to work with a different team, and we were writing standard operating procedure on how to use that specific software, because a lot of time people working on the ground, they won't have enough time to go through a very long manual. So sometimes we have to provide them and teach them and train them how to use a certain software. Not every job role will have that, but sometimes your internal stakeholders will require that kind of training and documentation, so that it becomes it is so that they can understand the new software that you are that you are bringing in can be understood, and they can start using it quickly. Again, that also depends on the company culture and how and what your philosophy is. It's just how things happen in Amazon, and documentation was a big part of it. We had this very big internal Amazon Wikipedia kind of thing. I don't remember what is it exactly called, but there was some kind of, imagine it like a Wikipedia or something, internal Amazon knowledge base or knowledge database, whatever. So we had this internal knowledge base, and the it was responsibility of every team to own their knowledge base, to properly deliver all the documentation of things that they were doing, because whatever you do will be used by someone else in future, be it in your own team or some other team. So great documentation is always helpful, and it goes a long way. It also shows that that you can explain the work that you are doing, and you can explain it to others who will be joining in future, and it shows initiative on your part as well, and it's just really useful for essentially becoming a more valuable member of the part of the company. So you can, if you're planning to stay in the company for a long term, it's better that you align with their processes and help them innovate. And writing documentation is one of the one is really important. Now, how it has helped me. So there are a lot of internal tools that we use within Amazon. We had a lot of internal build systems. They also have their own implementation of Java. You may have heard of Amazon Java Corretto. So because they have had all the documentation there, I was able to understand their build system, how they push code, what's their policy, where do they spin up staging environments or QA environments, what's their policy of running test servers, test databases, who do I need to reach out to if I need to set up credentials, or if I need a dev box or the dev machine. Because we had cloud dev machines where we used to compile our software, and sometimes the code bases were so big we could not compile them properly in our laptop, so we were assigned cloud dev machines for that. And all of that we can only understand if we read the documentation. So we need both create consumers and producers of documentation, right? Other than this, I got the chance to work on a mobile application there, and it was a very interesting project for me, because I got almost complete ownership of that specific project, and my seniors were very supportive there. That and the impact of that specific project was also pan India. So it was, I think, the work that I did there was it helped me grow
I would say very rapidly. Um, I'm glad that I was able to be a part of the team that valued both my personal and professional growth. And my manager was very open, as in I would say, in short, he was a very chilled out person. He was always open to feedback, and he used to provide me great insights about how I should be working, and I was able to learn a lot of things at both personal and professional levels. लाइक मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं था कि कंपनीज में यूजली ऐसा कल्चर नहीं होता कि यहाँ पे सर मैम नहीं बोलते हैं। तो मैं यूजली अपने मैनेजर को सर बोलता था। तो वो तो मुझे कहते थे कि नो डोंट कॉल मी सर, कॉल मी बाय माय नेम। सो हिज नेम वाज सुयोग। सो थोड़ा मुझे वो थोड़ा कल्चर शॉक थोड़ा समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा कि कंपनीज में कैसे बात करी जाती है। एंड वहाँ पे कोई कितना भी सीनियर हो, भी सीईओ सीटीओ और सी स्वीट डायरेक्टर वट, वो अगर उन वो लोग भी मतलब आपस में मतलब हमसे नेम फर्स्ट नेम के बेसिस पे ही बात करते थे, हम भी उनसे फर्स्ट नेम के बेसिस पे ही बात करते। तो दैट रियली, आई मीन, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, बट इट ब्रेक्स दैट काइंड ऑफ, आई वुड से, uh, g- uh, uh, it breaks that kind of barrier, that mental block we have sometimes, कि वो सर है, हम कैसे उन्हें बात कर सकते हैं, कैसे हम उनको बता सकते हैं अपने किसी में भी न्यू आइडिया सजेशन के बारे में। या फिर अगर आपको कहीं पे ब्लॉकर फेस करे तो हम कैसे बता सकते हैं सर को या मैम को कि वो उनको कहीं बुरा ना लग जाए कि हम काम नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन बैरियर ब्रेक करने में काफी हेल्पफुल रहता है। ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस, ensure that you communicate often and communicate early. So let's say you have some kind of blocker or some kind of pain points or whatever, किसी वजह से आप रुक रहे हो किसी काम में, it's always 100% better that you communicate those points as early as possible. Obviously you'll have to bring in data, you'll have to bring in your background research कि सही में ये ब्लॉकर है, सही में ये पेन पॉइंट है, एंड मतलब सही में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डू इट अर्ली, बिकॉज अगर वो थोड़ा बाद में आप जाके बताओगे ना, then it will be difficult for your manager to do damage control, and it will be difficult for them to advise you कि आपको अब जाके क्या solution ढूंढना चाहिए। तो when in doubt, communicate often, communicate early, over communicate, so a plan of action can be built early. ओके ओके। इंटर्नशिप के बाद लाइक आपने कहाँ कहाँ जॉब करी, आपको जॉब कैसे मिली, लाइक जॉब इंटरव्यू कैसे हुए, लाइक उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए, और वहाँ पे जाके कौन से जॉब रोल पे काम किया, और किस टेक्नोलॉजीज पे काम किया, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, और क्या काम करना होता है एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, और जहाँ पे भी आपने काम किया उसके बारे में कुछ जर्नी के बारे में बताएं। So after Amazon, I joined this cloud security startup called Accurix. I found out about this job because I received a message on LinkedIn. मैं online मैंने post किया था that I'm looking for jobs and all, and I have XYZ experience, and मैंने अपना resume share कर दिया था। And I think I was lucky that उस time पे jobs were available. There were plentiful of jobs available, and there was this new new cloud security startup. So the hiring manager, he reached out to me through LinkedIn, and he messaged me like, Gaurav, are you looking for a job? I'm planning to expand my team. So I said, yes, I am. So Nika, can you come to Pune? So I said, yeah, that's fine. So he said, okay, so whenever we need you, whenever we create a physical office, we'll let you know. But for now, for now it will be remote work. But whenever we ship, we'll let you know. तो मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन, बट आई माइट रिक्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ असिस्टेंस, बिकॉज मैं पहले कभी यहाँ पे पुणे में कभी आया हूँ नहीं, तो आई माइट नीड सम हेल्प देयर। तो he said yeah, that's fine, they will help me out with that. They'll help me in finding apartments and all. So वो मुझे फिर it felt fine to me, like, but I was a little bit still skeptical because it was still a startup, and sometimes I've worried that whether I'm joining the right company or not. But I decided to go with the interviews and all anyway. So there were about 4 rounds, I think. First round was pretty much casual discussion, like what do I do, what am I doing right now, and all. And so it was just like कि आपने ये last 2 years में क्या किया। मैंने कहा I was pursuing my masters, and अभी मैं job ढूंढ रहा हूँ and all. So then they told me about their company and what they want to do, about their vision in cloud security.
And uh, while I wasn't specifically too excited about working in cloud security, I didn't want to be too picky about my first job. I wanted to get my foot in the door, and I thought maybe I'll be able to find my specialization later, but at least job mil jaye pehle. Then after that, they gave me a take-home assignment. They asked me to implement some APIs and write some code, and I was able to complete that assignment on time. लाइक असाइनमेंट क्या करना, लाइक आपने क्या किया, थोड़ा असाइनमेंट के बारे में बताएं तो लोगों को पता चले. So my specific task was to create a small CLI application, and they gave me an example API. मतलब, they were hosting this temporary API somewhere, and my job was to write a simple CLI application that would make API get and host requests according to the specification that they had. That what kind of JSON data they will be sending, what kind of JSON data they are expecting. And so I did that. Originally, the assignment that I created, I think I misinterpreted it. So I created a local DB instance and created the CLI application. But then they got back to me and they said that I may have misunderstood. So they said that the API is already there. I don't need to make a local instance of the DB. So then they gave me 2 more days, and because it was a minor change, I was able to finish the assignment on the same day. And it was to boil it down, it was just some I just had to make some API calls to an example service that they created. It was fairly simple for that specific role. And because it was it was an entry level role, they asked me relevant questions according to that specific level. Other than that, they asked me whether I knew Terraform, Open Policy Agent, Frego, and all that. And because I did not know about them, uh, they did not ask me those specific questions. They asked me whether I knew programming and all. I told them that I knew how to write code in Go, and that's what that's the programming language I used to write my assignment in. And because their product was also written in Go, so there was some kind of alignment there. And there was this one final technical round where they asked me about a few things about cloud security and cybersecurity in general. There were some questions on IAM and disk encryption, but mostly around IAM and permissions and all, because that's the most important part in cloud security. There was this report by Palo Alto in 2022 where they said that about 99% of the users are not properly configured. Their permissions are not properly configured, and a lot of large scale attacks have happened because IAM users are not properly configured in a lot of in a lot of organizations. Be it Colonial Pipeline attack or Capital One attack, they can be traced to wrongfully written IAM policies. So those were really important questions there. At the end, there was this final round with their founders where they explained the vision of the company and what they're doing and what they have done before. And I was able to get a job offer from them. And because I was still a little bit skeptical, then I had this lawyer friend of mine. So I asked her to read the document and help me with it. And she took my request and she went through it, and I didn't find any problems with it. So essentially, they were not trying to trick me. That's what I was trying to find out. And luckily enough, there were no tricks. It was all good, and I was able to join Accurix, and that was my first job. It was all related to static code analysis. It was completely shift left. For those who don't understand shift left just means static code analysis. So इसको shift left स्टैटिक is कोड एनालिसिस के बारे में कुछ बताएं तो लोगों को पता चले कि लाइक होता क्या है, करते okay. कैसे हैं. Yeah. So as the name suggests, static means कि हम कोड को रन नहीं कर रहे. So let's say Accurix में तो हम क्लाउड सिक्योरिटी पे काम करते थे, तो उसमें वो स्पेसिफिक चीज में मैं आता हूँ. स्टैटिक कोड एनालिसिस इन जनरल ये हो कि आपके पास कुछ कोड है एंड उसको आप रन नहीं करोगे, आप उसको पार्स करोगे एंड देन कोड को समझोगे कि उसमें क्या चल रहा है, एंड देन कुछ पैटर्न मैचिंग के थ्रू ये फिगर आउट करोगे कि उसमें अगर सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो तो उसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज हैं क्या, कोई ऐसे फंक्शंस यूज कर रहे हुए हैं या फिर कोई ऐसे या फिर ऑब्जेक्ट को इस तरह से पास करा हुआ है या फिर फंक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से है कि वो आपके कोड को वल्नरेबल बना रहा हो. देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट डू स्टैटिक कोड एनालिसिस. उस टाइम पे
स्टैटिक कोड एनालिसिस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड मीन्स कि डॉकर का कोड हो गया, कुबरनेटिस का हो गया, या फिर टेराफॉर्म हो गया। अभी तो टेराफॉर्म क्लोज सोर्स प्रोडक्ट बन गया। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे कि ओपन टोफू इज द ओपन सोर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेराफॉर्म। तो दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड फाइल्स। इसमें अब या फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, फिर एज्योर रिसोर्स मैनेजर हो गया। तो इसको अगर मैं सिंपल में समझाऊं तो आप थोड़ा सा कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाओगे, एंड वो रन होगी जाके क्लाउड में, एंड वो आपके लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर देगी। आपको बार बार वेब कंसोल में नहीं जाना होगा, एज्योर के या गूगल क्लाउड या वट जो भी आप लोग यूज कर रहे हो, वहाँ पे उसके कंसोल में नहीं जाना होगा स्पेसिफिकली ये देखने के लिए कि मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, या फिर मुझे डेटाबेस चाहिए, या फिर मुझे ब्लॉब स्टोरेज चाहिए, ऑब्जेक्ट स्टोरेज चाहिए। आप वो डिक्लेरेटिवली एक फाइल में बना सकते हो, और उस फाइल को जब रन करोगे इट विल क्रिएट द रिसोर्सेज ऑन योर बिहाफ। तो अगर आपको 100 वर्चुअल मशीन चाहिए होंगे तो उसी में आप सिंपल डिक्लेरेटिवली मेंशन कर सकते हो। You don't have to do the same thing by going to that specific web console. एंड टेराफॉर्म ने ऐसा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म में बताता है कि आप टेराफॉर्म में सारा हमारा कोड डिस्क्राइब कर दो, एंड हम वो आपके लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर देंगे। तो आपको AWS या फिर एज्योर या जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसका स्पेसिफिक आपको कोड सीखना नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू विल स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लोग सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपको क्लाउड फॉर्मेशन और एज्योर रिसोर्स मैनेजर अलग अलग से नहीं सीखने पड़ेंगे। There are also other products like OpenTofu, Pulumi, and some other products, मुझे अभी नेम नहीं याद आ रहे, जो कि सिमिलर काम करते हैं। मतलब वो कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज ले सकते हो। तो हमारा कंपनी क्या करता था, हमारा प्रोडक्ट था जो कि टेराफॉर्म, डॉकर, कुबरनेटिस उन उन फाइल्स को इनपुट लेगा, उसको स्कैन करेगा। इट विल नॉट रन देम बिकॉज स्टैटिक कोड एनालिसिस, राइट। उसके अंदर हम पैटर्न्स, जैसे हम उस पैटर्न्स यूज करेंगे ये ढूंढने के लिए कि क्या हम कोई गलती से मिसकॉन्फ़िगर्ड रिसोर्स तो नहीं बना रहे, बिना इंक्रिप्शन के बना दिया मे बी, या फिर उसकी पब्लिक, या फिर उसको EC2 इंस्टेंस का तो पब्लिक एक्सेस दे दी, या फिर कोई लोड बैलेंसर बना दिया उसमें पब्लिक एक्सेस दे दी हमने। और पब्लिक एक्सेस में भी हमने IP एड्रेस के रेंज को मतलब 000 करके रख दिया कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। या फिर हमने कोई S3 बकेट बनाया और वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का एनक्रिप्शन डिसेबल करा हुआ है। या फिर हमने बहुत सारे सर्विसेज बनाए और लॉगिंग को टर्न ऑफ कर रखा है। या फिर हमने लॉगिंग तो सेटअप किया है लेकिन उससे रिलेटेड क्लाउड वॉच नहीं बनाया हुआ है ताकि हम लॉग्स को फिल्टर कर सकें। तो उससे रिलेटेड रिलेटेड हम पैटर्न्स ढूंढते थे। ये जो पैटर्न्स हम ढूंढ रहे हैं इसको हम कहते हैं सिग्नेचर। कोई भी अगर पैटर्न ढूंढना होता है तो उसको हम नॉर्मली सिक्योरिटी में जो हम टर्म यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सिग्नेचर। और कुछ लोगों को लगेगा कि माइंड में एकदम स्ट्राइक होगा कि सिग्नेचर मींस हैश, क्रिप्टोग्राफिक हैश। बट सिग्नेचर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट टर्म नहीं है कि सिर्फ हैश हो गया वो। सिग्नेचर इज एनी पैटर्न और एनी और एनी सेट और अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स और फंक्शंस, बेसिकली पैटर्न, जिसको मैच करके आप आइडेंटिफाई कर सको कोई स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट। बाय आर्टिफैक्ट आई मीन कि आप उस पैटर्न को या सिग्नेचर को यूज करके कोई स्पेसिफिक फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सिग्नेचर एज अ टर्म इज जेनेरिक इन दैट सेंस। और ये इट डजंट एंड सिग्नेचर सिर्फ क्लाउड सिक्योरिटी की फील्ड के लिए नहीं, ओवरऑल पूरे सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। आप कभी सुनते होंगे कि वो एंटीवायरस सिग्नेचर बेस्ड है, या फिर सिग्नेचर बेस्ड एनालिसिस करते हैं पहले। तो एंटीवायरस भी कई बार सिग्नेचर को यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई जो फाइल आपके पास डाउनलोडेड है वो मैलिशियस तो नहीं है। वैसे ही हम सिग्नेचर्स को यूज करके आइडेंटिफाई करते थे कि कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन, कोई वल्नरेबल कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है आपके टेराफॉर्म के फाइल में। कहीं जब आप रिसोर्सेज डिप्लॉय करो तो तब जाके आपके रिसोर्सेज एक्सपोज तो नहीं हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड पे, फिर आपका डेटा पब्लिक तो नहीं हो जाएगा। एंड वी यूज्ड टू डू दिस बिफोर डिप्लॉयमेंट, प्री डिप्लॉयमेंट, क्योंकि कोड को रन करने से पहले कर रहे हैं ना। एंड दिस होल प्रोसेस हम इसको पाइपलाइन में सेटअप कर देते हैं कि टेराफॉर्म का कोड डिप्लॉय होने से पहले कहीं पे गिटहब में जाएगा, कहीं गिट लैब या वट एवर, कहीं कहीं पे किसी रिपोजिटरी में जाएगा, या फिर कहीं पे भी जाएगा, आप जेनकिंस में या पपेटियर, शेफ, वट एवर, उसको पाइपलाइन में सेटअप कर सकते हो कि मतलब डेवऑप्स के पाइपलाइन में बेसिकली कि कोड कहीं ना कहीं जाके डिप्लॉय होगा ना, कहीं पे रन होगा। तो जाने से पहले कहीं पे आप कोड को चेक इन करोगे, कहीं पे अपलोड करोगे। तो यहाँ पे आपके पास कोड है, ये क्लाउड है, कहीं पे जा रहा है,
बीच में एक पाइपलाइन बना हुआ है, सेटअप करा हुआ है, जो कि उसको अपलोड करता है, रन करता है, कंपाइल करता है, वट। बीच में हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऐड कर देते थे, तो वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड करने में हेल्प करता था. We used to call it TerraScan. So we had one open source product, we called it TerraScan, and one cloud product, we called it I forgot the exact name, but एक enterprise product था और एक open source. So I worked on both of them. And जो open source product जो बीच में वहाँ पे लग रहा था, that whole process we call it DevSecOps. You might have heard of DevOps. So you put security within DevOps, it becomes DevSecOps. You put in checks and balances within your pipelines, within your processes, it becomes DevSecOps. And क्योंकि हम पूरा static code analysis पे कर रहे थे, so we used to call ourselves a shift left infrastructure as code security company. Or rather, we used to call ourselves as a policy as code security company. क्योंकि जो भी हम सिग्नेचर या पैरामीटर या पैटर्न्स जो बना रहे थे, उसको हम एक पॉलिसी बोलते थे, एंड क्योंकि हम वो कोड में लिख रहे थे, तो पॉलिसी एज कोड. सो द होल प्रोडक्ट वाज अबाउट शिफ्ट लेफ्ट सिक्योरिटी विद इन डेवसेकऑप्स स्पेस. ओके, दैट्स नाइस. उसके बाद आपने लाइक राइट शिफ्ट लिया, कंपनी चेंज करी, आप दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या काम करते हैं? लाइक कौन से रोल पे हैं, कौन कौन सी चीज टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं? पिछले काम से वो कितना डिफरेंट है? So I worked in Accurix for quite some time. We got acquired by Tenable after my first year there, but the company name remained the same. So Accurix became a wholly owned subsidiary of Tenable. Within Tenable, I also worked on the same product, Shift Left again. When I left Tenable, I joined another startup. It's called Privado. It's a privacy tech startup. So मैंने अभी पहले DevSecOps की बारे में बात करी. Privado did DevRevOps. So ये again, static. कितना अलग है? लाइक प्राइवेसी आ गई, ये कितना अलग है डेवऑप्स से? Yeah, so this is the interesting part. Okay, अभी तक जो static code analysis की इससे पहले, it was all for security. But Privado does static code analysis for privacy. It's all static code analysis, but they don't do it for security. They do it for privacy. So there are डिफरेंट companies that बिटवीन select. जरा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एक अगर आप बता पाए. Yes. उस पे आता हूँ मैं भी. So a lot of companies like Snake and Veracode, they do static code analysis for security. As in वो vulnerabilities ढूंढते हैं, misconfigurations ढूंढते हैं आपके कोड में. In privacy, it is hard to define कि privacy का meaning क्या होता है. तो from a very high level view, private data can be your personal information, name, age, weight, blood sugar, or things that are tracked by these health applications. And then आपका financial data होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, सीवीवी, सीवीसी, और एक्सपायरी हो गई उसकी, या फिर आपका यूपीआई आईडी हो गया, या फिर आपको किसी कंपनी से कंपनसेशन कितना मिल रहा है, आपका जॉब का सीटीसी कितना है, फिर आपका पैकेज कितना है, वो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया. वो भी आपका प्राइवेट डेटा में ही काउंट होता है. देन यू हैव स्पेसिफिकली मेडिकल इंफॉर्मेशन आपके बारे में, या फिर यू हैव आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि आपका आधार कार्ड नंबर हो गया, पैन कार्ड नंबर हो गया, वोटर आईडी कार्ड नंबर हो गया. उससे रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन हुई, वी कॉल इट प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन. एंड अ लॉट ऑफ companies need this personal information in order to provide you proper services. बैंक applications हो गई, health applications हो गई, games हो गई, when they want to provide you proper advertising. And a lot of companies, they forget to add proper privacy mechanisms, and it is not always due to malicious intent. Sometimes they do it because they have to quickly push out features, but they don't always have enough time to properly vet the SDKs and frameworks that they are using. And usually default options क्या रहते हैं SDKs में, they take all the data that they require from the users or applications, so that later they don't have to worry, or I don't have we don't have access to XYZ, so we cannot do analytics. So most of the time companies will prefer using default settings when they are on a tight schedule, and when they are working with some trusted third parties of their own, because following this whole supply chain of libraries that are used, this is a very time consuming effort. And a lot of time
जो larger libraries होते हैं that are implicitly trusted by the community as a whole, um, it becomes easier to just accept them as it is instead of going down the rabbit hole with them, whether that they're properly taking care of privacy or not, and whether they have proper options or not. And somewhere along the line, data gets leaked, and so, but this is not the only way data gets leaked. Sometimes some companies simply are malicious, while sometimes some companies are a little bit, I would say, not well versed with privacy. They don't always have a privacy program. So what our company did, we would use our software to identify the problems with their code. We would parse, so static code analysis करने के काफी सारे तरीके, and we wanted to do it properly. So we used to parse all of their code, convert it into a code property graph, and on that code property graph we used to write queries. And when I say code property graph, I mean कि कोड को हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसमें उसको एम्बेडेड ग्राफ डेटाबेस में सेव करते थे, एंड देन उस ग्राफ डेटाबेस पे हम ग्राफ क्वेरीज रन करते थे टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑब्जेक्ट्स and where are they going to some sync function. And let's say there's some source object that says maybe blood sugar or username, एंड उसका डेटा टाइप में भी पहले स्ट्रिंग था या फिर यूजर था वटेवर. तो अगर वो बीच में म्यूटेट भी होता है ना, उसका डेटा टाइप कुछ भी चेंज होता है कि पहले पहले तो क्लास था, इंटरफेस हो गया, फिर स्ट्रिंग बन गया, इंटीजर बन गया, वटेवर, एंड घूम फिर के किसी फंक्शन में जाता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फील्ड इनपुट, एंड एंड में वो जाता है मे बी किसी रेड शिफ्ट डेटाबेस के एपीआई कॉल में, या फिर आरडीएस के एपीआई कॉल में, या फिर किसी एनालिटिक्स एपीआई के कॉल में. So we'll be able to show all those journeys starting from the source to the sync, or rather from the source to the end of that specific object, कि ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका लाइफ एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड वो सब हम वेब यूआई पे शो करते हैं. We also used to generate the reports so that companies can be compliant with the specific law. तो जैसे GDPR को कोई specific reports चाहिए होता, तो we used to help them generate those reports for them. And we used to do this for application code. So be it web application, written in some Spring Boot, Java, or Python or whatever. So we used to parse that code, and then run our signatures to identify source objects, and where they're taking private information, and also identify the sync functions where they are finally sending it. Also, जो हमारा जो सिग्नेचर्स थे, दे आर नॉट लिमिटेड कि वो जस्ट ऑब्जेक्ट के नेमिंग कन्वेंशन पे नहीं था, क्योंकि कई बार क्या होगा कि यूजर नेम ऑब्जेक्ट जो है उसका नेम, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का नाम है, कुछ और भी तो रख सकते हैं ना, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है. तो वी हैड सम एल्गोरिथम्स टू आइडेंटिफाई कि जो हमने सिग्नेचर बनाया हुआ है वो हम डेटा टाइप, ऑब्जेक्ट का नेम, क्या उसमें गेटर सेटर है या नहीं है, तो उनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते थे कि कोई कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है वो सोर्स ऑब्जेक्ट काउंट होगा या फिर नहीं होगा. तो इट्स नॉट जस्ट कि हमने 10-15 नेम रख लिए कि यूजर नेम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यूजर नेम, यूजर नेम, माई यूजर नेम, दैट यूजर नेम, कस्टमर यूजर नेम, और क्लाइंट यूजर नेम. That won't always scale, but it was a mix between those specific signatures कि किस तरीके से हम कोई specific object बना सकते हैं, and also some analysis that we did about that specific data type, class type, and whether they have getters and setters or not, to properly tag all the objects. And then we used to show कि okay, these are all the objects, this is all the private information that you're taking, and these are all the SDKs and APIs or libraries where you are sending them. And we used to also identify कि कौन से थर्ड पार्टीज हैं आपके पास, कि आप इंटरनली कहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हो और थर्ड पार्टीज पे कौन से शेयर कर रहे हो, तो ताकि वो सब क्लियर हो कि आप कि 10 बार आपने डेटा मान लो किसी एनालिटिक्स कंपनी को भेज दिया, तो वो सारे स्टैटिस्टिक्स हम दिखाते थे उसके अंदर. एंड ये सब इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसका प्रॉपर रिपोर्ट रिक्वायर्ड होता था. It was all required by the law, and we used to automate that stuff for them ताकि companies are always informed. And if they feel कि data leak हो रहा है, and if companies identify something, or if we identify somewhere कि कहीं पे private data leak हो रहा है,
So we used to help them modify their code so that they can be compliant with the law, and they are also ensuring कि privacy properly users की customers की preserve करी जा रही है. तो आपने पीएचडी करने का कब सोचा? लाइक जॉब के साथ आपने करा कि लाइक जॉब क्विट करने के बाद स्टार्ट किया? पीएचडी करने का मेन मोटिव क्या था? Originally तो मैंने सोचा था कि I wanted to keep it as a more like a backup option for me in case if I'm not able to find a job, or in case if I find myself more interested in research. तो मैंने PhD के लिए अप्लाई किया right after completing my master's degree in 2020, and 2021 तक मेरा इंटरव्यूज मतलब क्लियर हो गए थे PhD के. And then I was at this point because मेरे पास जॉब था उस टाइम पे. मैं so it took me some time to decide कि क्या करना चाहिए. And with some discussion with my professor in the university, I was able to continue both my job and PhD at the same time. I started my PhD while keeping my आपने job. सेम ही यूनिवर्सिटी से ही चूज करा लाइक पीएचडी करना? आपने डिफरेंट ट्राई नहीं किया लाइक बाहर जाएं या फिर कोई और प्रीमियम कॉलेजेस ट्राई करें? इसके बारे में आपको कुछ ख्याल नहीं आया? I really wanted to keep my job while keeping my PhD. And maybe it would have been better कि मैं अगर maybe इंडिया के बाहर जाता, क्योंकि those universities they pay well during your PhD. But then I didn't really know the process how to do it. Also, I really wanted to stay in touch with the industry. I didn't want to lose sight of how things are done in the industry, because academia and academic research can become really different from how things are done in the I would say in the corporate world. मतलब ओवरऑल आपने देखा लाइक कि लाइक इंडस्ट्री से भी जॉब भी रहे, मेरी एक जॉब भी चलती रहे, लाइक डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आदमी मास्टर्स और पीएचडी करने जाता है तो इंडस्ट्री से काफ़ी दूर हो जाता है. तो आपने उसको देखते हुए लाइक आप जॉब कर रहे थे तो उसको भी आपने इंपॉर्टेंस दी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी रहे मेरी, एंड देन मैं जॉब के साथ जो पीएचडी कर पाऊँ जहाँ इजीली, वो मैं कॉलेज चूज़ करता हूँ. एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं थे लाइक कि लाइक इतना करेजियस डिसीजन ले ले कि जॉब क्विट कर दें एंड देन अगेन आप स्टडी करना चालू कर दें. Yeah, मेन यही वो था लाइक. करियर गैप नहीं दिखाना चाहता था मैं रिज्यूम में. तो वो एक्सप्लेन करना इट बिकम्स डिफिकल्ट. लेट्स से मैं PhD कंप्लीट करता हूँ, एंड ये इट्स नॉट अ गारंटी दैट द वर्क दैट यू डू विल एक्चुअली बिकम वेरी impactful और नॉट, बिकॉज इट्स रिसर्च इज अ प्रोसेस. यू कैन नॉट गारंटी कि ऐसा होगा ही होगा. इफ यू कैन गारंटी तब फिर तो रिसर्च नहीं रहना. वो तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे ही हो गया. तो calculating what I want to do in life, I decided, okay, I'll keep my job. And because my job was work from home, I was able to complete all the conditions that the university had on me, that you have to be available to the university throughout the day. And I was somehow able to manage my job and my PhD at the same time. Um, because I was able, I was because I was able to, because my job was work from home. So majority of the work I did after my day work, and if I had any emergency calls or meetings that I had to during daytime, I had plenty of time. I had in my research lab where I could take calls and continue with PhD work. So it was a, I would say, delicate balance, but because my job was work from home, it was easier to maintain that balance. ओके लाइक उसके लिए एग्ज़ाम होता है पीएचडी, मतलब अगर करना हो किसी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से, तो लाइक क्या क्या प्रोसेस होता है, कुछ आप बता पाए? So there are two ways you can do this. Either you can go for UGC NET exam, or you can go for NFSU's exam. I went for NFSU's exam. So if you do UGC NET, if you clear it, then you don't have to go for NFSU exam again. It's the same for most of the other universities. UGC NET अगर आपका clear होता है, you don't have to go for university specific exam. Then after that, you have to go for an interview, and it's a proper panel interview. They ask for your objectives, कि आपने थोड़ा सा कुछ आइडिया रखा हो कि आप किस चीज़ में PhD करना चाहते हो, किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हो, and whether it aligns with the professors who are there, whether it aligns with their goals and the research that they're doing there. And when interview then conduct होता है, then later they tell you whether you are selected or not. आप कैसे प्रिपेयर हुए थे उस चीज़ के लिए कि मैं वो इंटरव्यू क्रैक करूं? लाइक जो पैनल में टीचर्स रहते हैं उनके रिसर्च पेपर आपने पढ़े, वो किस चीज़ में रिसर्च कर रहे हो, तो मुझे पर्टिकुलर एक टीचर के अंडर रिसर्च करनी उस फील्ड में, लाइक वो ईजिली आपको पीएचडी वो जो करनी थी उनके टीचर के अंडर, तो वो अप्लाई कर ले, लाइक ले ले उस कॉलेज से. कैसे आपने फाइंड आउट किया ईजिली? So I searched number of seats available under different professors, and
जो मेरे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट में गाइड रहे थे, डॉक्टर पराग रुघानी, he had some PhD seats, PhD slots available in his team. एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ पहले काम कर चुका था, तो मुझे पता था कि उनका काम करने का प्रोसेस कैसे होता है एंड हाउ ही एक्सपेक्ट्स रिजल्ट्स. And because I liked the way he worked, and it was easier for me to work with him, and my goals were already aligned with the kind of research he was doing. उनका भी expertise digital forensics and malware and ऐसे fields में था, and मैं भी digital forensics में ही research continue करना चाहता था. So that's how I decided, okay, best place would be to just go for a university which is already specialized in forensics. And if I know already, if I'm already familiar with the professor, then I think it will be easier. So we had this preference list कि कौन से प्रोफेसर के साथ काम करना चाहोगे, and I was able to join. I was able to join Dr. Parag Rukhani when I applied for PhD. ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से रिसर्च एरिया में, कौन से स्पेसिफिक डोमेन में आपको रिसर्च करना है, और दिस इज समथिंग I had been thinking about since my bachelor's, because I really wanted to go for a PhD at some point in life. आई डेंट नो कि मैं डायरेक्टली मास्टर्स के बाद करूंगा या नहीं करूंगा, बट मुझे पता था कि आई रियली वांटेड टू डू इट सम हाउ सम टाइम इन. सो आई हैड गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट, एंड I feel if you're confused, if you're not able to find out कि क्या specific problem statement पे हमें काम करना चाहिए, कैसे research game ढूंढूं, मुझे कैसे पता चले कि कहाँ पे मुझे research करना चाहिए, best method is to read some papers within the same domain to find the gap कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है और क्या काम रहता है, ऑलरेडी कितनी रिसर्च हो चुकी है. मे बी यू आर लुकिंग एट डिफरेंट वेज ऑफ फाइंड डिटेक्टिंग मैलिशियस फाइल्स कि मालवेयर एनालिसिस पे कैसे काम करना है. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ मेथड्स की, कुछ सिग्नेचर बेस्ड होंगे, कुछ मशीन लर्निंग बेस्ड होंगे, कुछ जो कि सिर्फ विंडोज के मालवेयर पे काम करते हैं टेक्निक, कुछ टेक्निक होते हैं सिर्फ एंड्रॉइड पे काम करते हैं. सो यू हैव दिस रिसर्च गैप कि ओके, विंडोज वाला मिल गया मुझे, एंड्रॉइड वाला मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा कि जो मैक पे या लिनक्स पे मालवेयर को आइडेंटिफाई करने कर रहे हैं. तो वो आपका एक रिसर्च गैप हो गया. फिर मशीन लर्निंग करके कोई किसी ने कोई मेथड बनाया, एंड वो लेट्स से रैंडम फॉरेस्ट यूज करके क्लासीफाई कर रहे हैं. सो मे बी यू कैन फाइंड अ डिफरेंट टेक्निक टू इम्प्रूव ऑन इट. मे बी जो ऑलरेडी जो रिसर्च हो रखा है वो उसमें रिसोर्सेज काफी ज्यादा लगते हैं. रिसर्च गैप कैन बी इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशंस कि कितना स्कोप उन्होंने कवर किया. इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एप्लीकेबिलिटी की सपोज की कोई टेक्नोलॉजी है जो अब काम ही नहीं करती, या फिर कोई ऐसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बेटर है पहले वाले से. right? जैसे कि किसी ने सिर्फ HTTP 1 पे या 2 पे रिसर्च किया, एंड आपने देखा कि अब तो HTTP 3 भी आ गया, तो उस पर हम कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं. HTTP 3 में कैसे सिक्योरिटी एनफोर्स कर सकते हैं, फिर उसमें हम सिक्योरिटी फ्लॉज का निकाल के लेके आ सकते हैं. तो रीडिंग पेपर्स इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई योर रिसर्च गैप. बट अगर आपको लगता है कि there's a better way, या फिर आपने ऑलरेडी किसी चीज पे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं या कंटिन्यू कर रहे हो किसी में रिसर्च, तो that is also fine with you. जो वो आप अपने अपने पुराने रिसर्च को भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट जस्ट इंश्योर कि किसी टाइम पे आप एग्जिस्टिंग रिसर्च को स्टडी कर लो, एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू कर लो, क्योंकि it is one of the most important steps. Sooner or later you will have to do it as you enroll in the PhD program in a formal research program like this. आपको रिसर्च पेपर्स तो रीड करने ही होंगे, वो तो you cannot get away from that. So I think to make your research proposal more solid, you have to have some kind of background research done. And in my case, because मैं already forensics में interested था, तो मुझे कुछ तो आइडिया था कि हाँ, मुझे डिजिटल फोरेंसिक्स में ही रिसर्च करना है. सो आप फिर देन आपने स्टार्ट कर दी अपनी पीएचडी की जर्नी. तो आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे, लाइक रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, कितना फ़ायदा होता है, लाइक स्टार्टिंग कैसे करे कोई बंदा को अगर रिसर्च पेपर लिखना हो, तो क्या क्या वो चीज़ें ध्यान में रखे, कितना इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में, कितना हेल्पफुल रहता है रिसर्च पेपर लिखना, देन उससे क्या आप पर्सनली आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या होती है, कुछ बताएं रिसर्च पीएचडी और रिसर्च पेपर के बारे में. और Normally, writing a research paper will mostly help you within academia. Academia के बाहर भी applications हैं, but it's just easier to find the relevance of a research paper within academic research. It's not like it won't be used in outside. It will be, but majority it will be easier to find its relevance within academia. Now, how do you read a paper, or sorry, how do you write a paper?
to be able to write a good research paper, you have to read a lot of papers. So, common saying is something that my professor used to tell me. Uh, if you want to write good, you should read a lot. If you want to speak something good, you should listen a lot. So, I guess general advice would be read more, write less, listen more, and talk less. Because the more you read, the better you'll understand how to structure your research paper. Um, as for the guidelines about writing the research paper, now computer science and engineering is not as strict as some other domains like psychology. Research papers written in psychology and some other domains, they can be very 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 strict about the specific requirements कि ऐसे ही लिखा जाएगा पेपर. जो ये स्पेसिफिक आपके रेफरेंसेस हैं ये ऐसे ही होंगे, इनका इनको इनका किस ऑर्डर में आप सॉर्ट कर रहे हो वो भी स्पेसिफिकली वो मेंशन करेंगे. कंपेयर टू दैट, राइटिंग अ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड रिसर्च पेपर, इट्स अ लिटिल बिट easier, I would say. It as a, in terms of the structure or format of the paper. Majorly you'll have following things like there will be an abstract जो पूरा paper describe करेगा आपने क्या करा. There will be an introduction about what you have done, like what's the problem statement, to set the tone basically about the research paper. Then you have literature review कि पहले existing क्या research हुआ है. This is very extremely important कि होना ही होना चाहिए. I've reviewed some research papers that unfortunately did not have the literature review section, and I was very surprised. I mean, I was I was appalled even कि they didn't have literature review section. That has to be there. क्योंकि आप करंट रिसर्च की नोवेल्टी और करंट रिसर्च की नीड तभी बता सकते हो जब आप ये बताओ कि पहले क्या हो चुका है, कि आप कौन से गैप को फिल कर रहे हो, कि आपने अपना रिसर्च क्यों करा है. वो आपको कन्विंस करना होगा जिस भी जर्नल या कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हो. And after literature review, you can add your methodology, your experiments, or anything. After that, you have results and discussion, and finally, it comes to conclusion. So this is a normal format. There can be some changes in between. Maybe experiment section ज़्यादा बड़ा है आपका. Maybe आपका survey paper है तो there is no experiment. Maybe अगर आपका review article है तो again there is no experiment there. और maybe आपका methodology section ज़्यादा बड़ा है. So depending upon what kind of research you have done, you'll have to adjust those specific sections. किसी किसी research paper में background research का importance बहुत ज़्यादा होता है. So they have to provide a lot of background context for that. किसी किसी में क्या होता है जो आप स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हो, दे आर नॉट वेरी कॉमन इवन इन द कंप्यूटर साइंस और जो स्पेसिफिक डोमेन की वो थोड़े कम कॉमनली यूज होते हैं. समटाइम्स यू हैव टू डिस्क्राइब देम एज वेल. जैसे कि हैश, इफ यू आर यूजिंग हैश एल्गोरिथम्स फॉर योर रिसर्च पेपर, सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि क्या वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर हैश है या फिर वो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर हैश नहीं है. जैसे कि ब्लूम फिल्टर्स में यूजुअली वी यूज फास्टर हैशिंग टेक्नोलॉजीज और एल्गोरिथम्स, जैसे कि मरमर हैश हो गया या फिर कोई सिमिलर हैश हो गया, जो विच आर नॉट क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर. दे आर फास्ट बिकॉज दे आर ऑप्टिमाइज्ड टू बी फास्ट. बट इन केस कि अगर आपको किसी फाइल का इंटीग्रिटी चेक करना है तो यूज समथिंग लाइक SSJ256 और समथिंग जो कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर माने जाते हैं. दे आर स्लो बिकॉज दे आर डिफाइंड टू बी दे आर डिजाइन टू बी सिक्योर, दे ताकि उसको अटैक करके कोई ब्रेक ना कर सके उन हैशेस को. तो आई थिंक ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा इट विल बी डिफाइंड बाय द जर्नल और द कॉन्फ्रेंस, बट इट्स नॉट 100% one-to-one strict mapping. There are minor changes allowed. Other than the specific sections that you have in the research paper, the journal or the conference जहाँ पे आप भेज रहे हो पेपर, they will explain कि क्या specific font size होना चाहिए, डबल कॉलम है, सिंगल कॉलम है, कैसे, और उसके वो टेम्पलेट्स अवेलेबल रहेंगे. आई विल रिकमेंड कि आप लेटेक या फिर ऐसे किसी एडिटर में लिखो अपना रिसर्च पेपर इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड, बिकॉज इट्स इजियर टू फॉर्मेट व्हेन यू यूजिंग लेटेक और समथिंग. उसमें you'll be able to find templates and they will generate a PDF with almost perfect formatting that is required by the journal or the conference where you are sending the paper. You might be thinking मैं journal और conference word बार बार यूज कर रहा हूँ. तो मेजरली जैसा मुझे समझ में आता है 2-3 टाइप के रिसर्च पेपर्स होते हैं. या तो आपका जर्नल में जाएगा या फिर आपका कॉन्फ्रेंस में जाएगा या फिर आपका बुक चैप्टर बन के जाएगा. बुक चैप्टर्स आर ऑल्सो मोस्टली आई थिंक कॉन्फ्रेंस पेपर्स. जर्नल में क्या होता है, सो देयर जर्नल in journal papers you don't have to present them anywhere. You send them to a research journal like this, Forensic Science International, Digital Investigation,
there's future generation computer system, there's IEEE access, there ACM transaction on storage or whatever. You send a paper there, they will scrutinize it and then there will be a peer review process. वो डबल ब्लाइंडेड प्रोसेस होता है. आपको नहीं पता होता कौन रिव्यू करेगा, उन्हें उन्हें नहीं पता होगा कि किसने उनको रिसर्च पेपर भेजा है, ताकि बायसनेस को रिड्यूस करा जा सके. और तीन चार कोई प्रोफेसर होंगे या एक्सपर्ट्स होंगे सेम सेम एरिया में, जो कि आपके पेपर को रीड करेंगे और बताएंगे ओके गुड, नॉट गुड, minor changes required, major changes required, and they're very frank about it. They'll be very straightforward. They will not, most of the time they will not try to sugarcoat the things. So if you have done something good, they will say it as it is. Okay, good paper, ये मुझे अच्छा लगा. And if they find certain areas, okay, this is not good, so they will not sugarcoat that part. They'll say okay, this is something I did not like, so you need to change it. And I think वो straightforward जो feedback मिलता है वो help करता है better research paper लिखने में. Journals usually ज़्यादा strict होते हैं, and a lot of time journals, they don't charge any money for you to publish the paper. Most of the journals will publish it for free for you, so you won't have to pay anything to them. There are other types of journals which take money, but then they have a different kind of models. Like the person who is writing the paper, they have to pay for it, but the person who is reading the paper, they don't have to pay for it. So those are two different kinds of journals. Now conferences. In conference, when you submit a paper, usually they are a little bit less stringent as compared to their journal counterparts. And जो conferences में, if you get accepted, then you have to present your paper either online or offline. कि या तो वहां पे आपको जाना होगा, फिर मतलब वो वीडियो कॉल के थ्रू आपको प्रेजेंट करना होगा कि आपने क्या पेपर में लिखा है, आपका रिसर्च क्या था. तो अभी तक मेरा एक जर्नल रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है. इट वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक सिक्योरिटी एंड लॉ, JDFSL. It is a Web of Science indexed journal. And indexing पे आऊंगा मैं, बाद में आता हूँ कि क्या क्या होता है वो. And other than that, मेरे 3 research papers और accept हुए हैं recently. They were accepted in conferences that are run by Springer, and those they're all indexed in Scopus. So indexing, there are different indexing agencies or companies or इवन गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि ये डिफाइन करते हैं कि कौन से अच्छे जर्नल्स है, कौन से अच्छे कॉन्फ्रेंसेस हैं. तो नॉर्मली स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस वाले जो इंडेक्स जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं, दे आर कंसीडर्ड वेरी गुड. एंड दे आर आल्सो कंसीडर्ड सेफ जर्नल्स और सेफ कॉन्फ्रेंसेस, कि आप उन पे अपना रिसर्च पेपर भेजोगे तो वो कंटेंट चुरा के कहीं पे वो खुद से नहीं पब्लिश कर देंगे. तो यूजुअली स्कोपस और वेब ऑफ साइंस पे ये भी ट्रस्ट बना रहता है कि आपका कंटेंट कोई आइडिया कोई चुरा नहीं लेगा. अदर देन दैट देयर इज आल्सो यूजीसी नेट केयर लिस्ट. यूजीसी नेट का कोई केयर लिस्ट करके है, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई करे कि ये वाले जो जर्नल्स हैं, ये वाले जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, दे आर गुड एंड दे कैन बी एक्सेप्टेड विद इन इंडियन एकेडेमिया. एंड वो लिस्ट भी मोस्टली मैच करती है स्कोपस और वेब ऑफ साइंस से, क्योंकि दे हैव स्पेंड टाइम इन डिसाइडिंग एंड फाइंडिंग आउट कि सही में अच्छे एरियाज कहाँ पे इंडियन रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को अपने पेपर्स पब्लिश करने चाहिए. तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए या तो आप यूजीसी केयर लिस्ट या फिर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस, इन तीनों में से किसी को भी अपना स्पेसिफिक इंडेक्स एरिया ढूंढ सकते हो एंड वहाँ पे सर्च कर सकते हो जर्नल के नेम को कि वो वहाँ, या फिर कॉन्फ्रेंस को कि वो वहाँ पे इंडेक्स है या नहीं है. अगर वो वहाँ पे उनके लिस्ट में है, देन it is safe, and also it is also accepted by most of the universities within India and also outside India. ओके, सो आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर पब्लिश किए, उसके बारे में कुछ बताएं. तो my first research paper was on a triage analysis software that I created. उसमें मैं डिस्क इमेज क्रिएट कर लेता हूँ उसका, पेन ड्राइव का, या फिर जो भी अपने डिवाइस अपने कनेक्ट किया हो, एंड देन उसमें से मैं सारे इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. उसके ऊपर मैं फेस रिकॉग्निशन, फेस वेरिफिकेशन रन करता हूँ. ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द इमेजेस फ्रॉम फाइल्स वेरेवर दे आर एम्बेडेड, कि पीडीएफ में हो, वर्ड में हो, डॉक्यूमेंट में हो, फिर उसका किसी ने एक्सटेंशन चेंज कर दिया हो. I extract all the images and then I run some machine learning algorithms on them, like face verification, face recognition and all. And this one was published in Journal of Digital Forensics, Security and Law. इसमें लाइक आपने क्या नया किया, लाइक पहले जो चीज नहीं थी आपने कुछ नया किया, वो भी बता पाए. This was more of a consolidated effort कि एक सिंगल टूल हो जो कि प्रॉपरली फॉरेंसिकली साउंड मैनर में सारे एविडेंस को एक्वायर कर ले और फिर उसी के ऊपर एनालिसिस भी रन करते. तो
I wanted to make a one touch और one click tool कि आपको डेटा कि कई बार क्या होता है कि एफटीके इमेजर या फिर किसी सिमिलर टूल से आप वो निकाल डेटा एक्वायर करते हो, देन आप किसी और दूसरे टूल में लेके जाते हो, मे बी ऑटोप्सी या एनके से कुछ और जहाँ पे फॉरेंसिक एनालिसिस करते हो, देन किसी और मल्टीमीडिया एनालिसिस टूल में लेके जाते हो, एमपेड 4 और समथिंग समथिंग, जहाँ पे फाइनली वो फेस वेरिफिकेशन या कुछ और होता है। तो वो काफी लंबा और स्प्रेड आउट ऑपरेशन हो जाता है कि 4-5 अलग अलग टूल्स यूज करो, कई बार टूल्स का कॉस्ट भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है। तो मैंने एक ओपन सोर्स टूल ऐसा बना दिया सो दैट इट्स इजी फॉर एनीवन। जिसको क्लिक करें, एविडेंस वो सारा एक्वायर कर लेगा, रेलेवेंट फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर देगा, उसके बाद फेस रिकॉग्निशन, फेस वेरिफिकेशन रन कर देगा। ये तो जस्ट एक ही फंक्शन है जो मैंने उसमें डिस्क्राइब किया। सिमिलरली और भी फंक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो मान लो आपको वेपन आइडेंटिफिकेशन करना है, या फिर आपको मोशन आइडेंटिफिकेशन करना है, या फिर अगर आपको कोई कोई ईमेल्स में कीवर्ड्स को सर्च करना है, या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, दे ऑल कैन बी एडेड एज अ पार्ट ऑफ ट्रायज। तो सो माय कंट्रीब्यूशन वाज प्रोवाइडिंग अ सिंगल सॉल्यूशन कि वो फॉरेंसिकली साउंड मैनर में बिना टेम्पर करे एविडेंस को सारा एविडेंस कैप्चर करे, उसमें से रिक्वायर्ड फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करे रीड ओनली मोड में, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एविडेंस को बिल्कुल भी टेम्पर करा जाए, एंड देन उसके ऊपर एनालिसिस रन करके आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे। ओके, उसके बाद देन आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर पे काम किया? इसके बाद मैंने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा और एक सर्वे आर्टिकल लिखा, एंड देन एक मैंने आर्टिकल लिखा फॉरेंसिक टेस्ट बेड जनरेशन के लिए। वो टेस्ट बेड जनरेशन मतलब इस पर्सपेक्टिव से था कि फॉरेंसिक टूल्स को अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको आपके पास कुछ डेटा सेट होना चाहिए, एंड वो डेटा सेट या तो ऑर्गेनिकली आपको कहीं से मिला होगा या फिर आपने सिंथेटिकली जनरेट करा होगा। ऑर्गेनिकली जो डेटा सेट जनरेट जो आपको मिल जाता है, उस उससे फॉरेंसिक टूल्स और उस स्पेसिफिक डेटा सेट की जो रिलायबिलिटी है उसको टेस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि सेम डेटा सेट सबको शायद ना अवेलेबल हो सकता है कि आपकी एजेंसी को कुछ एक्चुअल क्राइम से रिलेटेड जो डेटा है उस इसकी एक्सेस हो, बट हर किसी के पास उसकी एक्सेस नहीं होगी, तो उसमें टूल का वैलिडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू कैन जनरेट सिंथेटिक डेटा सेट वेरी क्विकली एंड वेरी इजिली, तो आई थिंक उससे जो ऊपर जो फॉरेंसिक टूल्स है उन्हें वैलिडेट करना कि वो सही से काम करे या नहीं, वो आसान हो जाता है। एंड जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देखा था कि जो टेस्ट सेट जनरेशन वाले जो टूल्स हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू यूज, दे आर वेरी हैवी वेट। कि एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन पूरा सेटअप करो, वर्चुअल मशीन बनाओ, एजेंट को इंस्टॉल करो। सो आई थॉट ओके, दैट मेक्स क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन डेटा सेट जनरेट करने में ही। So I created a tool for that कि सिंपल आपको बस वो टूल रन करना है, it will generate a set of files for you, and वो जो फाइल्स हैं उसका आप डिस्क इमेज बना सकते हो, एंड देन उसको आप फीड कर सकते हो किसी फॉरेंसिक टूल में, ऑटोप्सी, एनकेस, एफटीके, व्हाटएवर, एंड वेरीफाई कर सकते हो कि whether those tools are properly working or not. So my research was creating a tool that will create synthetic data sets so that forensic tools can be validated. And research में already this is confirmed, this is verified कि synthetic data sets के through forensic tools को validate करना, उनके features को validate करना, it is much more reliable, क्योंकि वो ज़्यादा easily replicate हो सकता है same experiment। जो experiment मैं कर रहा हूँ वो experiment आप भी कर सकते हो, एंड सिमिलरली जो हम टूल टेस्ट कर रहे हैं वो मैं भी वेरीफाई कर सकता हूँ, फिर आप भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो कि फॉरेंसिक की टूल ए बी सी उनमें से कौन सा कि उनकी कि वो सेम रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं या फिर अलग अलग रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, फिर कौन सा ज्यादा रिलायबल है, कौन सा कम रिलायबल है। एंड ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं तो इट कुड बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग दैट, क्योंकि ये टूल्स वहीं पे काम आते हैं ना फोरेंसिक लैब में, सो दे नीड टू मेक श्योर कि टूल्स रिलायबल हैं। और रिलायबिलिटी और वैलिडेशन टेस्टिंग तभी हो पाएगी जब प्रॉपर डेटा सेट हो, एंड डेटा सेट हमें हर बार नहीं मिलेगा, तो हमें सिंथेटिकली जनरेट करना होगा, एंड जितना ज्यादा आसानी से सिंथेटिक डेटा सेट जनरेट हो पाएगा उतने ज्यादा लोग वेरीफाई कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो चेन बन रहा है ये मेरा टूल वहां पे फिट इन होता है कि इजीली डेटा सेट जनरेट कर सके, इजीली टूल्स को हम वैलिडेट कर सके। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज एंड टॉक्स अटेंड करी हैं, लाइक कितना इंपॉर्टेंट रहता है? आई थिंक नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है कॉन्फ्रेंसेस और टॉक्स को अटेंड करना, एंड मुझे काफी सारे अमेजिंग लोग मिले टॉक्स में, and I've been able to attend a lot of academic and non-academic conferences
लाइक फॉर एकेडमिक मैंने स्प्रिंटर वाले कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे हैं, वहाँ पे जहाँ पे मेरे पेपर्स एक्सेप्ट हुए थे। एंड कहीं कहीं पे मैंने जस्ट टू सी कि कॉन्फ्रेंसेस कैसे होते हैं वो मैंने अटेंड करे हैं। एंड अदर देन दैट इन टर्म्स ऑफ नॉन एकेडमिक मैंने नलकॉन में 2 बार टॉक्स दिए, एक बार 2022, एक बार 2023 में। दे वर ऑल अबाउट स्टैटिक कोड। 2023 वाला स्टैटिक कोड एनालिसिस पे था, and 2022 was about anti-reverse engineering and this and a programming language that I created. तो उसके अलावा गूगल डेवलपर ग्रुप, फेसबुक डेवलपर्स ऐसे करके बहुत सारे उनके अलग अलग टाइप के जो कॉन्फ्रेंसेस रहते हैं वो मैं जब तक दिल्ली में था तो और जब कॉलेज में था मुझे काफी टाइम मिल जाता था, मतलब उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना, या फिर जैसे जैसे फिर फ्यूचर में मुझे समझ में आने लगा कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, तो मैंने वहाँ पे टॉक्स भी डिलीवर करने शुरू किए। और आई थिंक नेटवर्किंग मेजरली मेरा पे काफी हुआ है, एंड आई बीन एबल टू टॉक टू पीपल फ्रॉम ग्रेट कंपनीज एंड जिन्होंने काफी अमेजिंग रिसर्च करा। आई मेट अ सीनियर रिसर्चर इन क्राउड स्ट्राइक, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर टॉक दिया था, पूरा वर्कशॉप दिया था नलकॉन 2022 में, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे होता है। I also met a director of NPCI in Nalcon, and but I was very intimidated कि वो लोग मुझसे बात करेंगे भी या नहीं, and I was very surprised that he was open to discussion, and we had a very healthy discussion. मतलब he didn't make me feel कि मैं उस लेवल पे हूँ या नहीं। तो I was very happy to see that people in such great leadership positions are open to discussions, and they're open to conversation. It made me really happy that people in this community or wherever they are doing amazing work, and they're taking a lot of input. And there's also of course he was a part of the leadership talk, so he explained a lot of things about how India is tackling cybersecurity, how we are doing in our payments infrastructure, and how and other levels. So it was a very insightful session. Then there were technical sessions, like I heard this talk from these two people who have been continuously contributing to Apple security by through their bug bounty program. तो उन्होंने पूरा अपना process explain किया, अपने technical talk में बताया, and they were also very it was very easy to connect with them as well. We were able to connect with our common shared interest of watching anime, and we discussed reverse engineering Apple HomePod and Roomba and all those technologies. It was really cool. So I think if you're in college and if you get a chance to go to one of these security conferences, do go for it. The talks are amazing, but go with a plan, because there'll be so many talks and you might get a little bit confused कि कहाँ जाना है. So make a priority list and then go to those talks, because you won't be able to इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बता पाए कि लाइक नलकॉन इज द बेस्ट, एंड देन बिसाइड्स या डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस हैं कि ये तो अटेंड कर लीजिए. Right. So there's Nalcon, of course, that we already discussed. And there's also B-Sides. B-Sides is also a security conference. There's THM, the Hacker Meetup. I think they have one conference or one event every month, and they have some kind of theme. वो almost हर major city, major state में होगा. There's also C-Sides. There's also CoCon. There's Black Hat. There's DEFCON. If you're able to go to DEFCON Las Vegas, then that's the main event that they have. But Delhi में भी होता है, DEFCON Delhi भी होता है हर साल में एक बार. तो DEFCON Delhi is just easier to go to. DEFCON Las Vegas, it's just far away, so it will be difficult to go there. But if you get accepted as a speaker, then it will be easier for you to go there, because I think you'll be sponsored by them. Similarly, for other security conferences, if you get accepted as a speaker, they will sponsor at least your hotel, and in some cases even also your travel. There's also ThreatCon Nepal that's happening in September, I think. So you can also go there, and there are a lot of security conferences now. But majorly, I think that the ones that are more accessible, that's Nalcon, B-Sides, and C-Sides. सो आप कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में बताइए, लाइक इन शॉर्ट्स. आपने जो कॉन्फ्रेंस नलकॉन में डिलीवर की थी 2022 में रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में, कुछ आप उसकी इंसाइट दे सकें कि लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग होती क्या है, क्या करना होता है.
in short? So if I talk about that specific session, I created this programming language and I call it mutant. I call it mutant because I'm mutating the bytes on the fly. So normally क्या होता है कि if you write some code in C, C Sharp, Java, anything, when you compile it and when you run your code, if you have hard coded some strings, hard coded some content, and if it's something like a password or the API key or something, तो अगर कोई memory analysis करता है कि रैम को कैप्चर कर लेता है किसी टूल को यूज करके, दे विल बी एबल टू सी कि रैम में क्या चल रहा है, दे विल बी एबल टू सी कि प्रोसेस में क्या चल रहा है। तो वो सिंपल स्ट्रिंग सर्च करे तो उसमें पता चल जाएगा कि ओके कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर एबीसीडी ऐसे कुछ पासवर्ड या कीज या कुछ थे, वो उनको मिल जाएंगे। इस पे मतलब रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे स्पेसिफिक एरिया में। तो इन माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हेन आई कंपाइल इट, वो ऑब्फस्केशन और एनक्रिप्शन ऐसे करता है कि व्हेन यू रन द प्रोग्राम, वो मेमोरी में आपको देखेगा नहीं। तो एक तरह से 3 स्टेट्स हो सकते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के, प्री एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन। तो जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जब वो सीपीयू में जा रहा होता है, तो मैं उसको डिक्रिप्ट कर देता हूँ, अदरवाइज उसको मैं एनक्रिप्टेड रखता हूँ। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई और अगर कंट्रोल फ्लो बनाना चाहे, उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम को रिवर्स इंजीनियर करना चाहे किसी भी टूल को यूज करके, या मेमोरीज का एनालिसिस करे, तो उनको नहीं पता चलेगा कि पासवर्ड क्या था, क्योंकि वो मैं रिवील नहीं करता जब तक वो सीपीयू में नहीं भेजना होता है। So it's not impossible to reverse it. Of course, it is possible. It's just difficult. Now, how do you get started with reverse engineering? The best way would be to start learning about assembly. Learn about x64 assembly, x86 assembly. Start with something. Start with one, or ARM v7 assembly. So when you, now assembly is not a very complex programming language. Assembly is simple. The number of instructions are a lot, so it feels difficult because it doesn't come naturally to us. Like be it C Sharp, Java, Python, it feels almost like English, right? तो वो थोड़ा बहुत हम relate कर पाते हैं, थोड़ा सा natural language जैसा feel होता है as compared to assembly. But while there are a lot of instructions in assembly, it is much more straightforward. C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वजह से हमें पूरा स्टडी करना पड़ता है कि जो प्लस ऑपरेटर किसी ने बनाया है, अगर किसी ने मालवेयर लिखा हो तो प्लस ऑपरेटर को वो ओवरराइड करके कुछ भी उसका फंक्शन बना सकते हैं ना। तो हमें वहाँ पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि प्लस ऑपरेटर का एक्चुअली में मीनिंग क्या है उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में। बट उस इतना ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन असेंबली में यूजुअली नहीं होता, तो इट्स यूजुअली सिंपलर टू अंडरस्टैंड इट व्हेन यू अंडरस्टैंड how to write assembly. Then there are some tools like there's IDA freeware. There's also IDA Pro, but that's a paid version of the same tool. There's also Ghidra, GHIDRA. It was created by NSA. वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है, वो डिकम्पाइलेशन भी करता है। देन देयर JADX, DOI, Dex2Jar, जो कि जावा के बाइट कोड को या फिर एंड्रॉइड के कोड को जावा के सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। देन देयर इज .NET Spy एंड .Peek, जो कि C# के कोड को VB.NET के कोड को सोर्स के कंपाइल्ड कोड को वापस सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है। तो यू कैन यूज दोज टूल्स टू अंडरस्टैंड कि कोड में अंदर चल क्या रहा है। बट वहां पे जाने से पहले भी आप चाहो तो सिर्फ स्ट्रिंग्स का भी एनालिसिस कर सकते हो। स्ट्रिंग्स करके एक टूल आता है, वो ऑलमोस्ट हर आपको लिनक्स मशीन में मिल जाएगा, बेटुबंतु और वटेवर। एंड वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स निकाल लेता है जो आपके कंपाइल प्रोग्राम में होंगे। उससे भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आईपी एड्रेसेस क्या है। मे बी मैंने बताया ना कि कंपाइल कर देते हैं तो भी उसमें स्ट्रिंग्स रहते हैं, तो स्ट्रिंग्स निकाल करके आप हार्ड कोडेड एपीआई कीज, आईपी एड्रेसेस, मैलिशियस यूआरएल्स कुछ वो भी निकाल सकते हो एज अ वेरी बेसिक एनालिसिस। इसके बाद अलावा बिन वॉक हो गया, बल्क एक्सट्रैक्टर हो गया, वो तो टूल्स हो गए काफी सारे। तो पॉइंट बस ये होता है कि नॉर्मली हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हम बोले तो हम वी आर बिल्डिंग समथिंग। इन रिवर्स इंजीनियरिंग वी आर ब्रेकिंग डाउन टू अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोग्राम है कैसे काम कर रहा है। Okay. एंड इट इज डन बाय मालवेयर ऑथर्स, मालवेयर रिसर्चर्स। जो लोग गेम को कभी कभी क्रैक करते हैं वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। ऊपर से मतलब एज अ समरी अगर मैं बताऊं, रिवर्स इंजीनियरिंग it's done to understand what a program is doing when you don't have the source code. When you're trying to find the source code, you want to understand how it was written, how the features were developed, and what you can do with them. Maybe it is a malware. You want to understand how the malware is working so that you can write some kind of protection against it. Okay, that's great. So आप अपडेट रहने के लिए कौन कौन से रिसोर्स फॉलो करते हैं, लाइक वो आप कुछ बता पाए जहाँ से आप कुछ सीखते हो, पढ़ते हो? There's this app called Feedly, and you can use this app to compile a number of different feeds जो अलग अलग आपको लोकेशन से मिल रहे हो। और भी होंगे ऐसे ऐप्स, मुझे अभी Feedly का ही नाम याद आ रहा है। तो जैसे ब्लीपिंग कंप्यूटर हो गया, या फिर
और कोई हैकिंग आर्टिकल्स अगर आपको मिल गए, कंपनीज भी अपने आर्टिकल्स लिखते हैं और RSS फीड्स निकालते हैं, तो you can connect them all to Feedly and you will be able to find out a lot of good information. ये ब्लीपिंग कंप्यूटर तो हर बार कोई जीरो डे आता है, कोई न्यू सीवी आता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। देन ट्विटर पे भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लिंक्डइन पे ही मिल जाती है। कभी कोई अगर न्यू वल्नरेबिलिटी किसी को मिलती है, फिर कोई न्यू पैच कहीं पे किसी को मिलता है, कोई न्यू एक्सप्लॉइट मिलता है, तो कई बार ट्विटर पे लोगों ने लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। कई बार लोगों ने ट्विटर पे बॉट्स भी बना रखे होते हैं जो कि सिर्फ यही काम करते हैं कि अलग अलग जगह से साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स को निकालते हैं एंड वो आपको उस पर शेयर कर देते हैं। इंटेल आउल करके एक प्रोजेक्ट है जो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और आपको थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स बताते हैं कि कौन से न्यू अटैक्स चल रहे हैं, कौन सी न्यू सीवी एक्सप्लॉइट हो रही है, कोई न्यू एक्सप्लॉइट आया हो, कौन सी सीवी पहले कम एक्सप्लॉइट होती है, मे बी अब ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गई है। जैसे कि डर्टी पाइप में भी कुछ 10 साल पहले कम एक्सप्लॉइट होता था, लेकिन अब डर्टी पाइप में भी ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लग गया है। या फिर कोई कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कोई भी पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे हम डीएसए वगैरह स्टडी करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, वहाँ पे कोड रन होता है। तो मे बी किसी को वहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी मिल गया किसी किसी प्लेटफॉर्म में, तो उसके बारे में किसी ने शेयर कर दिया कि ओके फोर्क फॉर्म हो पा रहा है कुछ। ओके, थैंक यू सो मच गौरव, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हमको दिया, इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप हमारे यूज़र्स को भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।